Okay, so here, okay, no. What we understand here, we have seen that we have configured the RIP and how RIP work. That is the basic concept. We have seen that RIP exchange the routing table, entire routing table from to its neighbor. Okay, so it will change with the like R3 will change with the R4, and R4 will change with exchange the routing with R5. The similar R5 with 4 and R4 with R3 also. So this is this way and this is this way. So this way it will exchange entire routing table or routing table get this updated. There are some basic information about the RIP. What is the basic information about the RIP? There are timers. Let me talk about timers first. So RIP timers. The first is how often it changed the routing table. So there is a 30 seconds. If you see this 30 seconds period to exchange the routing table. Exchange routing table, number one. Second, 180 seconds for hold down timer. Hold, hold down timer. And 180 second for invalid route. And plus 60 more second. What is that? 180 plus 60, how much? 240, correct. So 240 seconds for flush timer. So these are four timer that work with the RIP protocol. I will talk about this invalid route when we talk about the loop. Okay, when we talk about the loop in the second half. So this is something loop. But let me start with the first, second, and third. There is no use as of now at the moment. But yes, when we have loop, then it comes in the picture 180 second invalid route. But let's talk about one by one. पहला, अगर मेरे पास अगर दो या तीन राउटर्स हैं, ओके, और इनके पास कुछ राउट्स हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं राउटिंग टेबल, तो ये अपनी राउटिंग टेबल हर एक 30 सेकेंड्स में एक्सचेंज करते हैं। दैट इज डिफॉल्ट। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इसको 40 सेकेंड्स भी कर सकते हो, 35 सेकेंड भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, बट डिफॉल्ट इज 30 सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट इज द होल्ड डाउन टाइमर? कभी ऐसा क्या होता है कि जैसे इसके साथ अगर 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है, करेक्ट, इसके साथ 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है, तो ये जैसे 10 का नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा या इसके साथ अब इस 10 का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करता है? इमीडिएटली वो सभी राउटर को इन्फॉर्म कर देता है। इट विल नॉट वेट फॉर 30 seconds. It will not wait for 30 seconds. So immediately it will inform to all other routers, to neighbor routers. Okay, and here what will happen? It will start the timer for 180 second as a hold down timer. Hold down timer means, अब जैसे क्या हुआ, अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके पास 10 का नेटवर्क कनेक्टेड था। इसने जब राउटर 1 ने राउटिंग टेबल राउटर 2 को दिया, राइट, तो राउटर 2 ने एक एंट्री बनाई विच इज 10.00.0 वाया R1। ओके, जब इसने राउटिंग टेबल इसको दिया होगा R3 को, तो इसने भी एक एंट्री बनाई होगी 10.0.0 वाया R2 प्लस होप काउंट 2, यहाँ पर होप काउंट 1 रहा। अब जब 30 सेकेंड आने वाला है, अगले 30 सेकेंड में ये अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा, तो जब ये राउटिंग टेबल अपनी 30 सेकंड में एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पर देखेगा, अच्छा, ये 10.0.0 डॉट रूट इज नॉट अवेलेबल।
अब ये थर्ड जब रूट अवेलेबल नहीं होता है तो ये क्या करेगा, ये 10.0.0 को टाइमर स्टार्ट कर देगा और वो टाइमर होगा 180 सेकेंड का, और ये वेट करेगा कोई मुझे 10.0.0.0 के बारे में मुझे बताए। करेक्ट। Okay. जब तक 10, अब ये Yes. कब तक वेट करेगा, 180 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड होल्ड डाउन टाइमर। अगर ये 180 सेकेंड में नेटवर्क वापस अप आ जाता है और ये इसको इन्फॉर्म करता है, तो ये 180 सेकेंड में, विद इन 180 सेकेंड, तो ये वापस एक्टिव हो जाएगा। अगर सेकेंड तक इसको इन्फॉर्म नहीं किया तो उसके बाद प्लस 60 सेकेंड मोर, अगर मैं कहूं होल्ड डाउन फ्लश टाइमर स्टार्ट होता है। तो फ्लश टाइमर जो होता है वो होता है, फ्लश टाइमर इज इक्वल टू होल्ड डाउन टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर प्लस 60 सेकेंड। तो वो आपका 180 सेकेंड तो पास है, जो कि होल्ड डाउन टाइम था 60 सेकेंड, और वेट करेगा। अगर तब भी नहीं आया तो ये इसको यहां से डिलीट कर। ये 3 टाइमर होप सो क्लियर कि क्या होते हैं। एक तो 30 Yes. सेकेंड एक्सचेंज, राउटिंग टेबल एक्सचेंज, 180 सेकेंड फॉर एनी पाथ विच इज डिसकनेक्टेड नो मोर इन द नेटवर्क। तो वो अपना सारे राउटर इमीडिएटली नहीं हटाते, वो होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट करते हैं। इफ somebody having the information about 10 then okay, otherwise after 180 second another timer will start 60 second which is called flush timer। ठीक है, तो फ्लश टाइमर स्टार्ट होने के बाद 60 सेकेंड एक्सपायर होते ही वो अपने राउटिंग टेबल से उस 10 के नेटवर्क को डिलीट कर देंगे। अगर इसका लैब Okay. करना हो तो सिंपल है, जो आपने लैब कॉन्फ़िगर करी है, आप सिंपल 10 के नेटवर्क की केबल हटा दीजिए, लेफ्ट साइड के नेटवर्क की केबल हटा दीजिए, और आप दूसरे राउटर में जाइए, आप देखिए इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और आफ्टर Okay. 240 सेकेंड्स वो एंट्री भी डिलीट हो जाएगी। तो इट विल जस्टिफाई द टाइमर। दिस इज द वन थिंग। Okay. तो दिस इज ऑल अबाउट रिप वर्जन 1 फंक्शनिंग। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ। रिप वर्जन 1 प्रोटोकॉल, अब इस तरह से कैटेगराइज करता हूँ थोड़ा सा, और मैं डीपर जाता हूँ। मैंने बात की थी डायनामिक प्रोटोकॉल, राइट, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। वन इज डिस्टेंस वेक्टर routing protocol, और second is state routing protocol। These are two। distance vector routing protocol वो होते हैं, they uses distance as a metric। distance as a metric means from 1 to second what is the distance। तो ये जो distance है इसको as a routing protocol यूज करते हैं, और ये distance के रूप में ये यूज करते हैं होप काउंट। ओके। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल डिस्टेंस यूज नहीं करते। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लिंक को यूज करते हैं, मतलब अगले राउटर का क्या लिंक का स्टेटस है। ओके। तो ये लिंक को यूज करते हैं, लिंक का स्टेटस यूज करते हैं फॉर टू डिसाइड अ बेस्ट पाथ। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। एंड एग्जांपल इज ओएसपीएफ जो है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस डिस्टेंस to choose a best path for destination, and they uses hope count as a metric as a distance। Okay, that support maximum 15 hope count, that support maximum 15 hope count। Okay, after the 15 16 hope count अगर है, 16 होप काउंट अगर होता है तो उसको हम लोग ये लोग बोलते हैं इनफाइनाइट रूट। इनफाइनाइट रूट मींस you can say that invalid route or anything, invalid route or infinite route। ओके। Okay. तो वो 16 होप काउंट का, तो दे लाइक राइप वर्जन 1 डज नॉट सपोर्ट मोर देन 15 होप काउंट। दिस इज द वन थिंग। नाउ अनदर characteristics is this is classful। classful routing protocol
What does it mean by classful routing protocol? Classful routing protocol means they understand uh, whatever you IP address you mentioned, like 172. So what is the range of this first class of the IP address? This is the class B. So automatically they pick the class B subnet mask that is called default classful. So they does not require any subnet mask for route configuration. They pick automatically default. Pick automatically default one. So this is the characteristics of RIP version 1. Okay. Now, before going before going for RIP version 2, there is one challenge. I'm going to explain that. Okay. RIP challenge. RIP loop. What is that RIP loop? Okay. Now I'm going to explain this one. Oh, not this one. I have one router, two router, and three router. Okay. Now 10.0.0.0. Okay. Search is not working. Oh, I have this way. Let me design something. 11.0.0 and 12.0.0.0. अब समझते हैं. Let's understand. इसकी राउटिंग टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 10, 0, 0 एंड 0, 0, 0. इसकी राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है? 12, 0, 0, 0 and 11, 0, 0, 0. Let's understand what's the loop and how it create the loop. Routing table exchange to this one. Okay. What is Yes. that? It says that I have 10 information. So now it will mention 10 network here as it is. What is the hop count? Plus 1. One. Okay. It is 0 because directly connected. Okay. Now when it responds back, suppose mm, if I say that one second, create scenario, close the door first. There are lots of cracker outside. Okay. अगर ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, राउटर 2 वापस राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा, राउटर 1 के साथ, तो प्लस 2 करके भेजेगा. ओके. अभी समझते हैं. अब मैं ये कहता हूँ कि सपोज there is a disconnection of the 10. There is a disconnection of Okay. the 10. Okay. And by default, before the root poisoning and split horizon, what is that case? That exchange routing table back here, correct? Now it says that I have no 10 network disconnected, but this will say that I have 110 network, okay, and which is after one hop. Let me share you the detail. So it will add here because there is no directly connected network here. So directly Yes. connected network will not overwrite over there. So now it will say that okay, 10, 0, 0, 0
plus 2 hop. Again, Mhm. again, if I say that it will respond it back, it will be plus 3. Then again, it will say that, okay, now I have 10 network coming from the R1. Earlier it was coming from the R1 plus 1. Now Mhm. again it is coming from the R1. It will say that, okay, now it is the plus 2. Okay, then here plus 2 is there. Now it will plus 1, then it will be plus 3. So this way it will keep looping here. I mean, this will say that, okay, you wanna go with the 10, go via me. अगर ये कहेगा तुम्हें जाना है तो तुम मेरे थ्रू जाओ. तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को लूप करते रहेंगे. इनको पता ही नहीं है कि मैं जिसके सहारे बैठा हूँ उसके पास नेटवर्क ही नहीं. और ये जिसके सहारे बैठा है Mhm. R2, उसके पास भी नेटवर्क नहीं, वो मेरे सहारे बैठा हुआ है. राइट. तो Got it. एक एक ये चैलेंज रहता है एक्सचेंजिंग द राउटिंग टेबल. तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो ये क्या बनता है, एक लूप बन जाता है. तो जैसे ही ये क्या होगा, आफ्टर 16 होप काउंट ये बन जाएगा इनवैलिड इनवैलिड पाथ, और यू कैन से इनफाइनाइट पाथ. जैसे 16 पे पहुंचा, अब इनफाइनाइट Mhm. पाथ जो है वो फ्लड हो जाता है सभी राउटर्स के साथ कि भैया ये मेरा इनवैलिड पाथ है, इसको रख लो. और तब आपका वो टाइमर जो है, कौन सा टाइमर, यहाँ दिस वन, इनवैलिड रूट, दैट विल स्टार्ट. तो ये एक 180 सेकंड तक वेट करेगा कि कोई भी पाथ मेरे पास नहीं आए, तब तक मैं इसको इनवैलिड मान के रखूंगा. और इनवैलिड पाथ करने पर क्या रिजल्ट होता है? इनवैलिड पाथ, अगर ये 180 सेकंड स्टार्ट हुआ इनवैलिड पाथ, तो इसका एक रीजन रहता है. Mhm. क्या रीजन रहता है? कि कोई भी अगर मान लीजिए 10 कनेक्ट भी हो गया और उसने एडवर्टीजमेंट करके सबको बताया, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो इसका मतलब है, अगर इनवैलिड पाथ डिक्लेयर हुआ किसी नेटवर्क के लिए, तो 180 सेकेंड तक आप कोई भी राउटर उस पाथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा. दैट इज इनवैलिड. तो ये इसका Okay. डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमें अगर लूप बनता है तो उसको 180 सेकेंड के लिए होल्ड कर लो सभी लोग. क्यों ऐसा होल्ड करने का पर्पस क्या होता है? अगर होल्ड नहीं करेंगे तो जैसे ये डिसेबल हुआ, इसको होल्ड करना चाहिए था बट इसने नहीं किया, इसने स्टार्ट एडवर्टाइजिंग कि तुम्हारे पास नहीं है, देन आई हैव दैट इन माय राउटिंग टेबल. तो अब ये कहेगा ठीक है, मैं प्लस करके अपने पास सेव कर लेता हूँ, तुम्हारे थ्रू आ रहा है. तो अगर ये होल्ड कर लेता 180 सेकेंड तो ये होता ही नहीं. ठीक है. तो इसको बोलते Mhm. हैं, अब ये लूप बन गया. अब लूप को हटाते कैसे हैं? लूप को हटाने का दो तरीके होते हैं. पहला, स्प्लिट होराइजन. what is that split horizon? Let me go with document here. Come on. And where is that? I guess I need to reboot my laptop. But yes, touch is behaving unexpected. Now you see that here it is. Split horizon and root Mhm. poisoning. What is the split horizon? To prevent routing loops, RIP uses technique called split horizon. What is the split horizon? This means that router does not advertise route back through the interface from which it received the route information. मतलब राउटर उस इंटरफेस को वापस नहीं भेजेगा उस रूट की इंफॉर्मेशन. जैसे राउटर जहां से वो रिसीव हुआ है, जैसे 10 की इंफॉर्मेशन कहाँ रिसीव हुई, इसको यहाँ पर. तो इस इंटरफेस पे ये 10 की इंफॉर्मेशन वापस नहीं भेजेगा. Okay. करेक्ट. तो इससे क्या होगा कि भाई 10 की इंफॉर्मेशन इससे आई थी, अब आप इसी को बता रहे हो, तो ये +1 करके इधर सेव कर लेगा, फिर +2 करके इधर सेव होगा प्लस. तो ये एक तरीके से लूप बन रहा है ना. तो ये क्या करता है कि जैसे ये आकाश भाई आपने मुझे कुछ बताया, करेक्ट, Mhm. कि हनुमान जी मेरे पास जो है दिस थिंग इज अवेलेबल. ओके. मैं अगर किसी Mhm. और को बोलूं कि हाय सुखविंदर, आका मेरे पास दिस थिंग इज अवेलेबल, बट मैंने क्यों बोला Mhm. सुखविंदर को? क्योंकि मुझे पता है ये थिंग यहाँ पे अवेलेबल है. जब सुखविंदर बोलेंगे Yes. मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आई तो मैंने कहा चाहिए तो फिर यहाँ जाओ, क्योंकि मुझे तो आकाश ने बताई थी यहाँ पे अवेलेबल है. राउटिंग टेबल तो ऐसे एक्सचेंज होती है. करेक्ट. लेकिन Yes. अब यहाँ पर लूपिंग का Mhm. कॉन्सेप्ट समझिए. अब इनके पास, आकाश के आपके पास ये चीज नहीं रही. अब अगर आपके पास ये चीज नहीं रही, तो Mhm. मैंने तो सुखविंदर को बता रखा है ना, चाहिए तो बताना. Yes.
करेक्ट। अब सुखविंदर कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास अगर कोई ये चीज चाहिए होगी तो इस बंदे के पास है, हनुमान के पास है। जबकि आकाश, हनुमान ने आकाश के भरोसे दी थी, आकाश के पास वो चीज ऑलरेडी जा चुकी है। तो अब ये चीज मेरे पास चल के आएगी सुखविंदर से, और सुखविंदर सुखविंदर से पास मेरे पास से चलकर जाएगी आपके पास। करेक्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो चीज आपने मुझे बताई थी मेरे पास है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे पास है, तो एक लूप बन जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर स्प्लिट होराइजन का फंडा ये रहता है कि अगर आपने मेरे से कोई शेयर किया और मेरे को इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ, तो मैं वापस वही इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस पे नहीं भेजूंगा। दैट इज कॉल्ड स्प्लिट होराइजन। Okay. करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिट ठीक। होराइजन। स्प्लिट होराइजन यूज करते हैं हम लोग क्या नाम है, ओएसपीएफ सॉरी रिप के लूप को हटाने के लिए। तो ये बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि द राउटर डज नॉट एडवर्टाइज राउट back to the interface from which it received the route information. Okay. Okay. And another one is route poisoning. What is that route poisoning? When a route becomes unreachable, जैसे like 16, जैसे कोई रूट जो है अनरीचेबल हो जाता है, जैसे कोई डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे अभी जस्ट बताया कि 10 का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। रिप यूजेस रूट पॉइजनिंग टू इन्फॉर्म अदर राउटर्स द चेंज। कैसे? द अनरीचेबल route is advertised with the infinite metric। infinite metric means इसको वो क्या कर देगा, 16, क्योंकि रिप तो 15 हॉप काउंट को सपोर्ट करता है, जैसे 16 करेगा वो उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। इंडिकेटिंग दैट राउट शुड नॉट बी यूज्ड। वो राउट यूज नहीं होगा। तो मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हो गए, ठीक है, मल्टीपल राउटर्स है। तो अब अगर इसके पास अगर 10 की इंफॉर्मेशन थी और ये डिस्कनेक्ट हुआ, तो वो क्या करेगा, उसको तुरंत 16 करके इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, और एक इनवैलिड टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 180 सेकेंड का। करेक्ट। इनवैलिड सबका। दैट मीन्स अब 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन टिल 180 सेकेंड कोई भी अपडेट या एडवर्टाइज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं रूट पॉइजनिंग। वो रूट अब पॉइजन हो चुका है। ठीक है। आपके सभी राउटिंग टेबल, अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा, अगर रूट पॉइजनिंग ना करे तो ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ, इनके राउटिंग टेबल में तो अभी, तो ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहेंगे, वो लूप का कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। राइट। तो हमें तुरंत बताना होगा कि भैया अब मेरे से डिस्कनेक्ट हो चुका है 16, अब इसको अब इनवैलिड कर लो। यानी अगर कोई राउटर आपको बोलता भी है कि मेरे पास 10 की इंफॉर्मेशन है वाया मेरे थ्रू और कैसे भी उसके पास राउटिंग टेबल में आई होगी, तो आप उसे अपडेट नहीं करोगे। तो दिस इज कॉल्ड रूट पॉइजनिंग। Okay. ठीक है। तो देर आर टू फंडामेंटल हियर। स्प्लिट होराइजन कि एक इंटरफेस पे जो जिस पे आपका एडवर्टीजमेंट रिसीव हुआ उसी पे सेम रूट की इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा। दूसरा, अगर कोई पाथ इनवैलिड होता है, इमीडिएटली सारे राउटर को पॉइजन रूट की इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी जाएगी और वो उसका इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड स्टार्ट कर देंगे। Okay. So this is the way how to uh, save loop in the RIP protocol, and by default RIP split horizon and root poisoning is enabled when you enter RIP protocol. So it's automatically default enabled. Correct. It's automatically enabled. No need to run any command to enable it, because it's a mandatory things. It's a mandatory things. If this is not, then of course your most of the time your entire network will choke. You know what will happen if the loop is created? What will happen if loop is created? Suppose this is your router, correct? And we have router interface. Loop is created, all LEDs will start blinking together. Up, down, down, up, down, up, down, right? And nothing will happen. I mean, router will not for any packet from inside to outside. So in that case, entire network is choked, or you can say that entire network is down. So this is the um, uh, very bad situation
I would say that I was working for any like one project in that uh, ether channel was created. Somehow ether channel is removed, but that created a loop. So loop means correct. And when loop create, all the devices will stopping, all the CPU and memory get exhausted in that case, because huge traffic will be generated. Now in that case, your router will get hung state, and not only router, entire network device which is connected in that loop, so that everything will Mm. be disconnected. So in that case, whenever you see whenever see your all LEDs on the interfaces are blinking, continuously blinking, fast, that means Mm. loop has been created. Okay, Understood. so either you find out the loop. How to find out? There are very tricky things. Okay, what is the recent change you have performed? Find out the loop and disable that interface, then it will stop the loop immediately. Okay, or reset your network devices, and that is very big outage, you say that. So loop is very dangerous. Vendor has automatically get this enabled, split horizon and root poisoning when you enable the report. Hope this is clear. एक just question था कि बीच में तो जैसे जैसे नेटवर्क आउटेज होती है most probably is because of cause of the loop. जैसे ज्यादातर I get calls when I used to work like, oh, we have system like down, like whole site is down. There are most probably chances because of the loop. No, not mandatory. I would say that this is my data Not center. mandatory. This is my data center. In data Okay. center, I have storage device. Just for example, how data center looks like. This is my server, physical server. This is my second server, okay, and third server. And after the server, I'll say that switch, which will connect your server in the backend, okay, Mm-hmm. and storage in the backend. Now, switch will have a core switch that is the traffic outside with router. Any of these device which is connected together, one, two, three, layer 2, layer 2, and layer 3. Okay, generally most happen the loop is created here. If loop is created at the switch level layer 2, entire bottom network will stop working. And entire bottom Okay. means if storage is stopped, if server is stopped, there is nothing working. It means you can say that data center outage. Okay, if router is created low, so it may not be totally depend on your configuration part. Maybe total entire data center and outer accessibility, means you are somewhere, I am in India and you are in US, data center is US, so I will not able to reach out to my data center. So means data center will be completely isolated, or it may be possible your switch and router both will stop working. So in that case, you have to identify the loop and fix it. This is called loop. And something is inaccessible or not happening, something data flow is not happening, it may be misconfiguration or some other layer misconfiguration issue may be there. Okay, that could be the Okay. reason. Okay, and maybe you have created a VLAN and router is not properly configured with the gateway for the VLANs, so that can also the reason. Third, you have Palo Alto devices between the firewall and Palo Alto, so that is also blocking the traffic, and appropriate traffic is not allowed from source to destination, so that is another reason for the blocking any network communication. So there could be multiple. I will not say that loop means you completely missed your data center, simple. आपका डेटा सेंटर Okay. कंप्लीटली आउटेज में आ गया, लूप Okay. से बड़ा इशू तो नहीं हो सकता। तो बट यस, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशनल है, लूप बन गया, देन यू लॉस्ट एवरीथिंग, the huge outage. You can Just say a that quick DR. question also one कि ज्यादातर चीजें होती है whenever there's a changes
basically because it was working fine, but there's change happened Hmm. because of that it causes. So Correct, for correct. any changes which recently implemented. It is correct. Because loop Okay. automatically does not create, okay, because any infra is running since last couple of months and years, so no loop is created and sudden somebody change it. So what change it? Sometime Mhm. happens that, okay, uh, when loop is created, okay, I would say that when you configure redundancy, for example, this is the connectivity, fine, but people think that what if connectivity loss Yeah. between my switch and router, then they do this way. I have two connectivity, so I will configure ether channel like this, so it will be 10 gig 10 gig, so you virtually you will have a 20 gig network or link between two router or two switches, but this will create a loop. This create a loop. Redundancy always create a loop. So there is a proper solution for that. If you don't implement to avoid the loop, otherwise you will be in trouble. Very simple. And you absolutely said right. Whenever a change in the infra, it may the cause the loop, improper planning or improper configuration. Understood. Yeah. Okay. Mhm. So Next. that's it about the RIP version 1. Any doubt, any question, Akash, please, you may raise regarding. वो डाउट क्लियर कर लिया वही मेक सेंस Sorry. मैंने बोला डाउट जो थे वो क्लियर कर लिया ओके, तो मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर